we have defined the refractive index with the ratio of speed in the first medium to the second medium. That is nothing but a refractive index of second medium with respect to medium 1. This was done. Medium 1 is speed is V1, into it is V2, to ratio of that is refractive index of 2 with respect to 1. And since V is equal to F lambda, F means frequency, which is generally denoted by nu. Okay. So we get the other relation in terms of lambda. Now, first medium is vacuum. Then V1 will be equal to C, that is the speed of light in vacuum. 3 into 10 to the power 8. And it will be refractive index, then will be called absolute refractive index. V2 को V लिख देंगे, that will be the speed of light in the second medium. Speed of light in the particular medium in which it is entering. And in terms of wavelength also we can define. If we want the speed in the medium, we have to divide the speed of light in vacuum by refractive index of medium. Similarly, wavelength will also be decreasing. In both cases, it is decreasing. Absolute refractive index is always greater than 1, you know. ये हमेशा 1 से more होता है. So velocity will also go down, wavelength will also go down if light enters into the other medium than vacuum. ठीक है? Refractive index we have seen. ये vacuum का 1 है, and here also close to 1. Others medium are having more. All right, this was done. ये question था. When ray of light enters in a glass slab from air, its wavelength decreases, since velocity decreases. Frequency remains constant. All right. और ये discuss कर रहे थे Cauchy's law, refractive index also depending upon the wavelength. If wavelength is, it is inverse relation, wavelength is more, refractive index will be less. Red color has more wavelength, therefore less refractive index, therefore rarer. Red color जो है is rarer as for red color, refractive index is less. Medium is rarer for red color. Red color के लिए rarer है. Rarer means speed ज़्यादा होती है उसमें rarer में. तो क्वेश्चन ये डिस्कस हो रहा था, light ray of which color, red or violet, will be faster in the glass. The red color is rarer, therefore faster. Refractive index of red is less than that of violet, and the speed depends upon the inverse relation of refractive index. Red का refractive index कम है, तो speed ज़्यादा है. Red color पहले cross हो जाएगा. If red and violet are incident of the glass, it will be crossing first. Violet will be lagging behind by slight distance. All right, this was done. Up to here we did it. Now we are going to see proof that N21 is N2 upon N1. Suppose ये दो मीडियम है, ये N2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर N1 है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप टू विद रिस्पेक्ट टू 1 इज N2 upon N1. लाइट ऐसे आएगी, इसमें जाएगी. So what we can do, we can multiply, we can write the relation of N21, that is V1 by V2. C से multiply and C से divide करके balance कर सकते, we can get it. इसमें V1 है, इसमें V2 है. तो C से multiply and dividing and readjusting the terms will give you
the required relation. Can you see it? देखिए ये रिलेशन अभी हमने रिवाइज किया था, पढ़ा था हमने, सी से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, और V2 ये वाला इसके साथ एडजस्ट करो, V1 को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो C by V2 इज नथिंग बट N2, सेकेंड मीडियम क्या हो गया ये, C by V1 is N1, है ना, absolute refractive index of each medium. So this is proved. Subscript you can see N21, N2 is coming first, N1 1 is coming second. Okay. How to get the second one? N21 is, if you want to interchange the subscript, we have to do the reciprocal. इसको देखो वेलोसिटी से करेंगे, N21 इसको भी सेम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे V1 by V2 से स्टार्ट किया, और N12 क्या होगा, इसमें देखो जो सबस्क्रिप्ट पहले आ रहा है उसका इधर डिनोमिनेटर में पोजीशन है, तो इधर बाद वाले कैसे, इफ यू वांट डू N12 तो 1 वाला इधर होगा, 2 वाला इधर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, V1 is getting cancelled, V2 is getting cancelled, राइट साइड में 1 हो गया, therefore N21 is equal to 1 upon N12. रेसिप्रोकल करना है तो सबस्क्रिप्ट के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2। ठीक है, तो कंबाइंड रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, N21 is V1 by V2, lambda 1 by lambda 2, but N2 by N1। इसमें 1 वाले टर्म्स पहले आ रहे हैं, इसमें 2 पहले आ रहा है। स्पीड एंड वेवलेंथ के टर्म में 1 सबस्क्रिप्ट कम्स फर्स्ट, जिसमें से लाइट आ रही है वो वाले पहले, और जिस मीडियम में जा रही है वो बाद में है, और यहाँ भी रिफ्रैक्टिव, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको पहले पढ़ते हैं, जिसमें से आ रही है उसको बाद में पढ़ते हैं, और इसमें पहले लिखते हैं उसको, फर्स्ट मीडियम की स्पीड, फर्स्ट मीडियम की वेवलेंथ। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस आपको। Clear to use this, everybody? Because we need it in the numericals and derivation for the derivations. Yes, sir. Yeah. ये देख लो क्वेश्चन है, if refractive index of glass and water are 1.5 and 4/3 respectively, then find the refractive index of glass with respect to water. NGW, ये important है पार्ट। गिलास का वैसे तो 1.5 है, if we keep it in water, what will be the effect, whether it will go up or go down? सराउंडिंग को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, सपोज ग्लास लेंस को पानी में डाल दिया है या प्रिज्म को पानी में डाल दिया है ना, तो देयर इज द चेंज ऑफ सराउंडिंग मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, NG अपॉन, यहाँ पर देखो इसके टर्म्स में 2, तो 2 पहला सबस्क्रिप्ट पहले आ रहा है 2, यहाँ G NG अपॉन NW लिखेंगे, NG की वैल्यू पुट कर देंगे, NW की वैल्यू पुट कर देंगे। Can you see it?
From this relation, we can write NGW is NG upon NW. Refractive index of glass, that is 1.5. Water ka 4/3, put it here, solve it. It is coming 1.125. Decreases with respect to water. Water में डालने से decrease हो रहा है. जब surrounding is air or vacuum, that time it is maximum. If you put it in the some denser medium, it goes down with respect to that medium. After getting NGW, उसका उल्टा करना है, NWG निकालना है, तो रेसिप्रोकल कर दो 8/9. In fact, this is not, इसको छोड़ सकते हैं. This is nowhere is required. Second part you can just leave it. Clear? This is important. This is required in various further topics. Clear to everyone? Now, moving on to the next one. Now, laws of refractions. When light moves from the one medium to other medium, it is undergoing the change in the path because of change in velocity. So we have the law related to this. So if I is the angle of incidence in the first medium, R is the angle of refraction in the second medium, so the ratio of sin I by sin R remains constant. That is nothing but the refractive index of 2. इसका ये 2 medium है, ये 1 है बाहर का. Refractive index of medium 2. This is medium 2, this is 1. ठीक है. So with respect to 1 and 2, this is medium 2, this is 1. So it is equal to N2 1, which is nothing but N2 upon N1, which is constant. So ratio of angles, sine of angles of incidence and of sine of angle of reflection is constant. I being the angle of incidence, R being the angle of reflection, with normal. This is also called the Snell's law of reflection. And ratio of sines of ये हो गया first one. And second one, they are coplanar. Incident ray, normal, and refracted ray are coplanar. In other words, a refracted ray will not leave its plane. Cannot neither go away or not towards this side. तो इधर उधर नहीं जाएगा, उसी plane में रहेगी. Refracted ray will not swing away, will swing from its plane. Just it can bend. It will bend towards the normal or bend away from the normal. ये ऐसे हो सकता है, नॉर्मल की तरफ आ सकती है, दूर जा सकती है, but it will hold its plane, है ना, no swing. Got it? Now, sometimes this relation sin I by sin R, we get confused in case light is going from denser to rarer medium. That time we have to write 1/n like this. Okay. I mean, अगर suppose vacuum है, if it is vacuum, the formula will be what? First medium is vacuum. So sin I by sin R will be equal to n. अगर first medium vacuum है, so sin I by sin R will be equal to n. If first medium is vacuum, ऐसा आएगा.
because n2 will be n, n1 will be 1, like this है. अगर हमने फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम कर दिया. Now other form also we can write like this. If we can, this sometimes is easier for doing numericals है ना. तो θ1 I की जगह θ1 ले लो, R की जगह θ2, first medium is n1, second medium is n2. Now using the relation this one, sin θ1 by sin θ2 is equal to n2 upon n1, cross multiply करेंगे, it will be n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. It is, in other words, we can write n sin theta is equal to constant. Now if n increases, theta decreases. अगर ये इसका refractive index is more and n is more, theta will go down. यहाँ से देखो दोनों का product constant है. If n goes up, theta goes down. If n goes down, theta goes up. अगर refractive index कम है इसका, ये theta will increase. It will just bend away from the normal. That's what conclusion is from this simplified form of the Snell's law. Now, when rays enters in the denser medium, okay, that's what I explained you already. Denser medium में normal की तरफ bend हो जाएगी, theta will decrease. For multiple flat media में जैसे आपने glass रख दिया, फिर उसके बाद plastic रख दी, फिर water, तो multiple के लिए n1 sin θ1 will be equal to n2 sin θ2. If we get such result, we can generalize it. n3 sin θ3 and so on. Multiple media. We can directly equate this one with the third medium or fourth medium. We don't have to find, we don't have to solve this first, then this. First को last medium के साथ equate करके problem solve कर सकते हैं. It will save our time. Getting these points? First को last medium के साथ 3 medium है तो first को 3 के साथ सीधे equate कर सकते हैं. एंगल कैसे होंगे? एंगल सपोज देखो ये यहाँ से अगर हम देखें, सपोज ये ऐसे हो गया, ये θ3 हो जाएगा और ये n3 हो जाएगा. गेटिंग और नॉट? एंगल तो नॉर्मल से रखना पड़ेगा और ये θ2 ही रहेगा इधर अल्टरनेट. ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. कैन यू डू दिस क्वेश्चन? Ray of light passes through 4 transparent media with the refractive index mu1, mu2. Refractive index n लिखिए या mu लिखिए, both are same. As shown in the figure, the surfaces of all media are parallel. Parallel होनी चाहिए. Flat surfaces होनी चाहिए. If the emergent ray CD, this one, is parallel to the incident ray AB, दोनों नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहे हैं. ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा. क्लियर नॉट? Yes, sir. क्या आंसर होगा बोलो? Sir, D. डी. ओके, म्यू1 एंगल देख लेते पहले थोड़ा सा. यहाँ से नॉर्मल के साथ ये θ1 हो जाएगा. θ4 हो जाएगा.
ये एंगल ऑफ, मतलब इसको इसके साथ ले सकते हैं, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। μ1 sin θ4 है ना, बट θ1 इज इक्वल टू θ4। ये पैरेलल है ये वाली इसके साथ, ओरिजेंटल से इक्वल एंगल बनाएंगे, चाहे अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये सेम आएंगे, θ1 एंड θ2। अगर आगे थोड़ा आगे भी शिफ्ट हो गई है और ये ऐसा, इसको इधर ले आओ, पहले अगर ये पैरेलल है तो इसके साथ ऐसे आ जाए, θ4 हो जाएगा। यहाँ से हमें μ1 और μ4 इज इक्वल टू μ1। डी ऑप्शन, गॉट इट। मतलब बीच के मीडियम को हटा सकते हैं, दोनों हटा दीजिए और इसके साथ लग गया है। क्लियर टू एवरीवन? Yes. आर यू कन्विंस्ड? ठीक है, तो दिस क्वेश्चन was asked in some competitive examination. What about this question? ये थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसको बड़ा कर सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन। Can you see it now properly? Yeah. Which of the three drawings here shows physically possible reflection? कौन सा करेक्ट हो सकता है? देखो, रिफ्लेक्शन फिनोमेना कौन सा रिप्रेजेंट करता है? बोलिए। इसको चेक कर सकते हैं वन बाय वन। नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पर। क्या यहाँ से देखो, इसका रिफ्लेक्टिवनेस 1.4 है और इसका 1.6 है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। इट इज बेंड टुवर्ड्स, एंगल कम हो गया, इट वाज गोइंग लाइक दिस, shifted towards normal because it has gone to the denser medium. So this is okay. And इसमें देखो सेम साइड में आ गई, नॉर्मल की दूसरी साइड में आनी चाहिए, इट शुड गो ऑन द अदर साइड ऑफ नॉर्मल। ऐसा नहीं होता कि सेम साइड, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम हियर, जस्ट रिफ्लेक्शन में दूसरी साइड में जाना चाहिए, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की दूसरी तरफ जाना चाहिए, ऐसे हो सकता है। दिस इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट दिस?
It is entering into the ये 1.3 1.6 में जा रही है. It is going away from the normal. It should have gone toward the normal. ऐसे bend होना था इधर. Gone away means rarer medium में it should go away. Denser में it should come close to the normal. Because of the formula mu1 sin theta 1 is equal to mu n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. Only first one is right. Got it? Yes, sir. Such situation can arise. You should be confident enough to do it. Can we solve this problem? What is happening here is rays incident at angle 45 in the medium of refractiveness root 2 and other side medium is vacuum. You have to find the angle of refraction in the second medium, in the vacuum that is. कितना एंगल बनाएगी incident ray with the normal in the second medium? Tell me. Solve it and tell me. Using Snell's law of refraction, you can just find out the angle in the vacuum. Solve it quickly. And you have to tell the path. कौन सा path follow करेगी? That will depend upon the angle. Are you getting it? क्या आंसर हो रहा है बोलो? यहाँ पे do it fast. Sir, 90 degree. Okay, path कैसा होगा फिर? ये किधर जाएगी? 90 डिग्री ऐसे, vertical और horizontal? The horizontal. Angle is measured with the normal. So we can do it n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. जो medium 1, you can take this medium 1, no problem. किसी भी medium को 1 ले सकते हैं. हमने इसको medium 1 लिया. n1 is root 2, theta 1 is 45, n2 is vacuum is 1, theta 2 will be calculated, sin theta 2 will be 1, theta 2 will be 90 degree. Normal के साथ angle आ जाएगा. It will go like this. अच्छा उससे करें जो sin r by sin r से करके देखे आ रहा है उससे सही. Yes, sir. कैसे किया फिर sin r by sin r? Sin I by psi r is equal to n2 by n1. Okay, n2 by n1. n2 by n1 है. N2 by ऐसे किया है. यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. जनरली क्या लिखते हैं हम लोग n लिख देते हैं ना, जैसे हमने नॉर्मली sin r by sin r is equal to n. यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. If you write n, then I think it will not come in. ये 45 will be 1 by root 2 और sin r is to be calculated. और n you take root 2. यहाँ से कितना आ रहा है? sin r would be 2.
which is not possible. which is not possible है ना. Next, 2 कहाँ आ रहा है? Is it coming to sin I by sin R 45? It is coming 1 by 2 R R2 Yes, 1/2. 30 degree. Angle is coming less है ना. Whereas it angle should be more. यहाँ पर हमें 1 by n लिखना पड़ता है. अगर वैक्यूम में जा रही है तो 1 by n. Otherwise n2 by n1 is okay. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 है ना. तो 2 तो 1 हो जाएगा, n1 1, तो यहाँ पे 1 by n बचेगा ऐसा. So that problem may come when the light goes from denser to rarer medium. Then you have to be careful while writing this relation. Sin I by sin R is equal to n. तो ये आपको देखना पड़ेगा. Actually n नहीं होता है, n2 by n1 होता है. You have to see n2 is vacuum. तो vacuum का 1 हो जाएगा, n1 is n, तो 1 by root 2 आएगा उधर. तो अगर वो better take the help of alternate form of the Snell's law है ना. ये वाली फॉर्म यूज करो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा. किसी को भी मीडियम 1 ले सकते हैं. यू कैन टेक मीडियम 1 दिस एंड मीडियम 2 दिस है ना. तो जिस मीडियम में एंगल है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना. क्या सर नो. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, उसी में एंगल दिया हमने साइन का. ये वैक्यूम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में एंगल आ जाएगा. थीटा विल बी 90 हियर, ये एंगल आ जाएगा 90. रे विल बी गोइंग पैरेलल टू द common surface of two medium, interface of two medium we call it. Clear to everyone? देखो deviation निकालना है इसमें. It was path was like this और bend हो गई, suppose it has gone this side, तो R, तो total angle is I and this is R. तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, that is nothing but a deviation. Del is mod I minus R. अगर वो इधर भी जाएगी तभी भी दोनों का डिफरेंस है. Mod means difference. I by R. You know. Whichever is bigger, you can take it first. The difference of I and R will be the deviation produced in case of refraction. Clear? Yes. Mirror में क्या था? What was in reflection? Pi minus 2i. Yes, pi minus 2i. Correct. Okay. So R pi plus 2i also, if we take it from other side. But छोटा angle generally we write. Okay. So this is deviation. Sometimes you may require it. ये आपका NCERT book का question number 4 exercise. So figure A and B shows refraction of ray in air. यहाँ भी air है, यहाँ भी air. At least one side is air. Incident at angle 60 degree. ये 60 दिया with the normal to the glass and water air interface. यहाँ पे glass and air है, और यहाँ पे water and air है respectively. Predict the angle of refraction in the glass when angle of incidence in the water. थर्ड यहाँ पे आपको ये निकालना है, angle of refraction in the glass if angle of incidence in the water is 45. तो अगर हमें
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए, ग्लास का मिल जाए, यूज कर सकते हैं यहाँ पर NW इंटू साइन 45 इज इक्वल टू एन ग्लास इंटू साइन थीटा 2, ये एंगल निकाल लेंगे। तो ग्लास का यहाँ से मिलेगा, नहीं ग्लास का तो ऑलरेडी, नहीं दोनों का नहीं दिया है ना, तो ग्लास का यहाँ से मिलेगा, वाटर का यहाँ से मिलेगा, फिर इसमें यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, ओके लिख लेते हैं आगे, यू कैन डू इट इजीली। N1 formula used in all cases will be this one, तीनों में यही फार्मूला। तो यहाँ से 1 इज एयर साइन 60, 2 इज ग्लास, ग्लास को NG लिख रहे हैं, साइन 35। फर्स्ट डायग्राम फिगर 1, यहाँ से क्या मिल गया, NG इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 35। देखते कुछ एंगल कैंसिल हो जाएंगे तो अच्छा। फिगर 2 एयर से आ रही है, यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे, एयर से आ रही 1 साइन 60 इज इक्वल टू NW साइन 47। Defective index of glass is sin 60 upon 47 and sin 47। फिगर 3 वाटर से जा रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला यहाँ लगाया वाटर का, NW sin 45 and glass sin θ2, ये एंगल θ2 ले लिया हमने, निकालना है। NW की वैल्यू पुट कर दो sin 60 अपॉन sin 47 है ना, NG की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, sin 60 divided by sin 35। साइन θ2 निकालना है, मतलब θ2 निकालना है, साइन 35 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू रख सकते हैं, टेबल यूज करनी पड़ेगी अभी, है ना। अभी टेबल मिलेगी तो वैल्यू पुट करो, साइन 35 की देखो कितनी है, साइन 45 साइन 47। you have to solve it now, you need the table, without that cannot be done। Yes, there is no other way to do it। all right, कैलकुलेशन इज ओके, कोई मिस तो नहीं हुआ, कोई पॉइंट, एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लेस्ड। ठीक है, ये use the log table for sine value of sine 35, 45 is known 1 by root 2, 47 will be slightly bigger than, more than 1 by root 2। ठीक है, सॉल्व कर लेना,
Now next one is the lateral shift. Suppose ray ऐसे आ रही थी. It was supposed to be going like this. Now it undergoes the reflection. ऐसे bend हो गई, फिर बाहर आ गई. Suppose ये वैक्यूम है, ये एयर है, इधर भी एयर है, ये तो पैरेलल रहेगी, बट शिफ्ट हो गई किधर? इट इज शिफ्टेड वन साइड. This distance, perpendicular distance between two parallel two rays, this one which was supposed to be going, but final incident ray and emergent ray के बीच का distance is called lateral shift. So how much it will be? So इसको it comes to be this much. इसको prove करना है. T being the thickness of the slab. ऐसे ऐसे स्लैब है, ये वाली थिकनेस चाहिए हमें. ये जिस जिस जिसको क्रॉस करके जा रही है वो दिस थिकनेस इज रिक्वायर्ड. T being the thickness. तो यहाँ पर देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एंगल डेविएशन कितना है, I माइनस आर. पहले ये वाला एंगल ले लो, ABC. Cos R will be T upon hypotenuse. ये AC. T is the base, being base, एंगल R के लिए. AC मिल जाएगा फर्स्ट ट्राइंगल से आपको, T अपॉन cos R. फिर ये वाला एंगल ले लीजिए आप, ACE. नॉर्मल इंसिडेंट क्या है यहाँ पर हमने, ये 90 डिग्री है. तो साइन I माइनस R will be opposite, that is lateral shift, divide by hypotenuse, this is AC. AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले, फिर AC की वैल्यू पुट कर दी T अपॉन cos R. ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस है ना. थिकनेस अगर कम हो गई, थिकनेस इज वेरी स्मॉल, तो लेटरल शिफ्ट विल बी टेंडिंग, नो लेटरल शिफ्ट, जीरो हो जाएगा. अगर थिकनेस टेंड्स टू जीरो, थिन प्लेट है, थिन ग्लास प्लेट है, तो लेटरल शिफ्ट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. बट इफ थिकनेस इज मोर, if thickness goes up, lateral shift goes up. Got it? एंगल्स वगैरह तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं ना, एन पर डिपेंड करेंगे, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेंगे ये एंगल्स. क्लियर और नॉट? Yes, sir. अगर आई को बहुत कम कर दिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस से रिड्यूस टू से 2-3 डिग्री ऐसे कर दिया, आर विल आल्सो बी लेस. सपोज ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री आ गया, डिफरेंस 1 डिग्री का हो जाएगा. तो साइन आई माइनस आर को हम साइन लिख सकते हैं. एंगल जब लेस देन 10 डिग्री होते हैं तो साइन कैन बी लेफ्ट आउट, ये छूट जाएगा. कॉस क्लोज टू 0 डिग्री 1 और 2 डिग्री विल बी क्लोज टू 1. एंगल बहुत छोटा है, 1 डिग्री है या कुछ है, तो ये 1 हो जाएगा. we will be left with T and I minus R. तो कभी कुछ क्वेश्चन assumption क्या आते हैं, एंगल being very small, then prove that lateral shift is T into I minus R like this, because ये भी 1 हो जाएगा, ये साइन हट जाएगा, ऐसा कुछ आ जाता है. For small angle of incidence, very small angle of incidence. ठीक है. तो lateral shift, you are supposed to know this relation. Any difficulty in this?
इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके ओके, normal shift is important. इस पे क्वेश्चंस, most of the questions are seen in board examination and competitive examination. तो सपोज कभी कभी आप ऑब्जर्व करते हैं कोई कंटेनर में ऐसे पानी भरा है और यहाँ पे कोई कॉइन डाल दिया आपने, कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इट appears to be at lesser depth than the actual depth. Even you observe the base also. कंटेनर को बेस को देखोगे ऐसा लगता है कि ये ऊपर आ गया, ऐसा है ना. तो एक्चुअल डेप्थ इज more than the apparent depth. Swimming pool also, if you see the swimming pool, जो actual उसकी depth होती है, it is more. What we feel is less because of the phenomena called normal shift. Normal shift की वजह से हमें कम दिखता है, उसका feel होता है, actual is more. So because of the phenomena called refraction, let's say how it happens, what happens, why it is appearing to be normally shifted, why the base appear to be normally shifted. Phenomena of refraction. देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यू सी, पहले तो देखते क्यों क्यों ऐसा होता है. ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, रेज यहाँ से गई, बाहर निकली एयर में, तो बेंडिंग away from the normal. Observer will feel rays are coming from this point. Object is here, but he will see the image. उसको लगेगा यहाँ पर है, object is here, but that is not the object. That is the image of the object which is normal shifted. ऊपर चली गई वो, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल शिफ्ट हो गई. अपने पास जो रेज आती है, we assume that they are coming from the object, but it is not. They are coming from the image of the object. Object यहाँ पर है. Getting? So let's see how much is the normal shift and how much is the apparent depth. देखो ये actual depth है यहाँ पर और ये उसकी apparent depth है. हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर है वो. H dash is called apparent depth. H is called actual depth. So let's do it. देखो ये टॉपिक यहाँ से है. देखो एक्चुअल में ये है, नॉर्मल शिफ्ट का टॉपिक है, बट पहले अपरेंट डेप्थ करते हैं. ऑब्जर्वर क्लोज टू नॉर्मल. देखो एनसीईआरटी बुक का डायग्राम ये है. देखो ऑब्जर्वर बिल्कुल ये नॉर्मल है, उसके यहाँ से देख रहे हैं 10 डिग्री दिस साइड और 10 डिग्री दिस साइड. तो ऑब्जर्वर क्लोज टू नॉर्मल, इसको हटा देते हैं. इसको देखो यहाँ पर diagram I have shown you, but I have made a separate diagram. Topic starts from here. देखो ऐसे है, ठीक है. इसमें हम क्या ले रहे हैं? Now you see, ठीक है. Can you see? Normal shift. Normal shift से ऑब्जर्वर क्लोज टू नॉर्मल. ये एंगल ये हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, डायग्राम क्लियरिटी के लिए दूर दिखाया, बट इट शुड बी क्लोज. दीज एंगल्स शुड बी लेस देन 10 डिग्री. यहाँ ऐसे दिखाना चाहिए था हमें, बट क्लियरिटी के लिए थोड़ा दूर दिखाया. क्लोज टू नॉर्मल. ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, एयर में है ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट इधर लिक्विड वगैरह में है, पानी में. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम. पहले अपरेंट डेप्थ निकालनी पड़ती है, ये वाली एच डैश. कितना कितना हमें अपीयर हो रही. व्हाट वी फील एक्चुअल डेप्थ इज एच. ऑब्जेक्ट इज हियर. एच इज द एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम द अच्छा इंटरफेस से लेना है, यहाँ से मेजरमेंट करना है. जो दो मीडियम का कॉमन सरफेस उसको इंटरफेस बोलते हैं. एच डैश इज द अपरेंट डेप्थ. ये यहाँ पे इमेज बन रही है तो इतनी है एच डैश, दिस मच ओनली. आई मीन यहाँ से यहाँ तक एच डैश.
Now, an object is the refractive index of medium in which object is present. इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है. एन ऑब्जर्वर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोस्टली इट कैन बी हियर. ये 1 हो जाएगा. आगे चल के अभी हम नहीं लिख रहे इसको. ठीक है. एंगल्स आर स्मॉल नाउ. एंगल्स आर स्मॉल. आई एंड आर. ये आई हो गया. देखो ये आई है. सॉरी, अगर ये आई है अल्टरनेट एंगल से ये भी आई होगा. साइन आई विल बी साइन 10 आई. एंगल छोटे होते हैं तो साइन की जगह 10 भी लिख सकते हैं. 10 आई यहाँ से देखो, दैट विल बी ए बी अपॉन एच. ये एच है, ये पूरी डेप्थ. ए बी अपॉन एच हो गया. आर देखो यहाँ से ये आर हो गया, इसको एक्सटेंड करो, इधर भी आर आ जाएगा ये, है ना. तो 10 आर विल बी ए बी अपॉन एच डैश. ए बी अपॉन एच डैश, है ना. नाउ स्पेस लॉ लिखेंगे. n1 sin i. n1 मीन्स ये ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. sin i की वैल्यू पुट कर दो ए बी अपॉन एच यहाँ से. n2 इज एन ऑब्जर्वर जिसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है. sin r इज tan r विच इज ए बी अपॉन एच डैश. तो ये कैंसिल हो जाएगा. ए बी यहाँ से अपरेंट डेप्थ विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन व्हिच ऑब्जेक्ट इज देयर इनटू h. तो एक जनरल फार्मूला है, दोनों कवर कर सकता है. ये जो फार्मूला है आपका, जस्ट विल क्लोज हियर. एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं. दिस कैन कवर बोथ. ऑब्जर्वर रेयर में है या डेंसर में है, जो भी उसका मीडियम है, जनरल फार्मूला बना सकते हैं इसको. बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इफ आउटसाइड इज एयर और वैक्यूम, आउटसाइड में यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है, तो एन ऑफ द ऑब्जर्वर जिसमें ऑब्जर्वर उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा. तो और ये बचा अभी केवल डेंस, मतलब एक ही मीडियम बच गया अभी बाहर का, तो 1 हो गया. तो एन ऑब्जेक्ट विल बी एन. ये क्या फार्मूला बनेगा, एच डैश विल बी एच अपॉन एन. और एन कैन बी, एन को इधर शिफ्ट कर दो, एन कैन बी एच अपॉन एच डैश. कैन यू सी इट. इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते. ऑलराइट. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलना है मीडियम का. तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ निकलना है तो एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वाटर के अंदर निकालनी है तो n विल बी 4/3 पानी का. 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 रह जाएगी. 75% अपरेंट डेप्थ दिखेगी हमें. नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया, ये नॉर्मल शिफ्ट है. नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ एच डैश. यहाँ तक है ये. तो एक्चुअल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ एच माइनस एच डैश. एच डैश की वैल्यू ये पुट कर दो इधर यहाँ पर. तो एच अपॉन एन. नॉर्मल शिफ्ट विल बी एच ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n. कैन यू सी ऑल दिस. Are you able to see it? Yes, दिख sir. रहा है आपको. तो ये फार्मूले बन गए अपने. जनरली इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, बट डेरिवेशन समटाइम्स दे में आस्क. बट यू डू रिमेंबर apparent depth is actual depth upon effective index and normal shift is h ब्रैकेट में 1 माइनस. इसमें क्या लिया हमने, आउटसाइड मीडियम में वैक्यूम है ना, और एयर. और ऑब्जेक्ट किसमें है, डेंसर में, पानी में है ना. और ग्लास, जैसे हम ग्लास अगर पेपर वेट कभी कभी रख देते हैं हम न्यूज़पेपर के ऊपर,
तो उसके जो प्रिंटेड वर्ड्स है वो थोड़े ऊपर दिखते हैं। कर्व्ड सरफेस की बात नहीं कर रहे, अभी फ्लैट फ्लैट ग्लास प्लेट की बात कर रहे हैं। कर्व्ड होता है तो फिर उसका दूसरा फिनोमिना, दूसरा फार्मूला बनेगा। फिर फ्लैट है तो यहाँ पे दिस बीइंग द फ्लैट सरफेसेस एनीवेयर। अभी कर्व्ड सरफेस पे नहीं पहुंचे हम लोग, ठीक है। तो इसके एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, यू कैन ट्राई टुडे बेस्ड ऑन दिस एंड दिस। ये कब काम आएगा? जब आप ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर बाहर है, तब ये। और ये सभी केसेस के लिए हो गया। ऑब्जेक्ट कहीं भी है, सपोज ऑब्जेक्ट को अंदर, ऑब्जेक्ट को बाहर रखो और ऑब्जर्वर को अंदर बैठा दो, तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। ऑब्जर्वर पानी के अंदर है तो यहाँ पर एन आ जाएगा, NW आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बाहर है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। दिस कैन कवर ऑल द केसेस, बट यहाँ से हमने ये पर्टिकुलर केस, ऑब्जर्वर इन रेयर एयर में है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, तो ये पर्टिकुलर केस यही अपने टेक्स्ट बुक में, इट इज इन द टेक्स्ट बुक, दिस पॉइंट दिए वाला यही केस। बट वी कैन सी द अदर केस आल्सो फ्रॉम दिस फार्मूला। ऑब्जेक्ट को अंदर, ऑब्जेक्ट को बाहर, ऑब्जर्वर को पानी के अंदर या दूसरे मीडियम के अंदर। बट दिस इज द मेन वन। इसके क्वेश्चन है आपके बुक में। Shall I show you the questions? Then we'll wind up. Done this? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है, मैंने बताया ना ग्लास, ये हम ग्लास प्लेट भी रख सकते हैं बीच में, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया उन्होंने टेबल पर, बीच में ग्लास प्लेट रख दी, तो जितना थिकनेस है, आई मीन व्हाट इज कॉल्ड, यहाँ से देखना है ना, इस पॉइंट से, यहाँ से कितनी कितनी दूर पे। ओके, लेट अस सी जस्ट small pin fixed on the table is viewed from the above from a distance of 50 centimeters. ये पिन है यहाँ पर। Okay. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a glass, viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass plate, glass slab held parallel to the table. The effective index of glass is 1.5. Does the answer depend upon the location of the slab? तो अगर हम क्या निकालना है, by what distance would the pin appear to be raised? नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट निकालना है तो कितनी कितनी ऊपर चली जाएगी? दैट डिपेंड्स अपॉन द दिस मीडियम। ये जो मीडियम है, ये जो ग्लास स्लैब दिख रहा है आपको, उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस है, दैट विल बी एच। एच यहाँ पे थिकनेस लेंगे, दैट विल बी टी, दैट विल बी टी, टी विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, विल बी एच। 15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। गॉट इट? एंड इफेक्टिव इंडेक्स इज गिवन। ये डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है ना। ऑब्जर्वर तो यहाँ पे ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, ये डिस्टेंस नहीं मैटर कर रही। जितना ये था, इसकी थिकनेस, वाटर की जो भी मीडियम, दैट मैटर्स। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इतना लेना पड़ेगा, दैट विल बी एच। तो ये लोकेशन एच, यहाँ पे देखो हमने लिखा है इंटरफेस से डिस्टेंस है, तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट विल मैटर एंड इफेक्टिव इंडेक्स इज देन। यहाँ पे देखो एक मिनट, डिड आई सॉल्व इट? यस, लेट अस सी, इज इट सॉल्व? यस, यहाँ पे सॉल्व है, देखो चलो।
We can save the time. Normal shift will be h1 minus 1 by n. तो 15 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. पुट कर दिया, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी इसकी वजह से, है ना. कहाँ 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गई, यहाँ कहीं पर. इट इज कमिंग लाइक दिस, इट इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर. तो अभी डिस्टेंस पूछ सकते हैं. पहले डिस्टेंस 50 था, टोटल डिस्टेंस 50 था. ऑब्जर्वर से 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, कितनी डिस्टेंस पे डिपेंड हो जाएगा, 45 पे उसको अपीयर होगी. बीच में हमने ग्लास प्लेट लगा दी, तो 45 पे 5 नॉर्मल शिफ्ट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ 45 पे ही विल फील इट, इट इज अवे बाय 45. एक्चुअल डिस्टेंस इज 50. ये जो एक्स्ट्रा ये दिया है, बट दैट इज नॉट requirement here. Only normal shift पूछा है. We find out normal shift and leave it. Let's see what is given. The pin appears to be raised by 5 centimeter. It can be seen with the explicit raised diagram that the answer is independent of the location of the slab for small angles of incidence. स्लैब को डायरेक्ट इसके ऊपर रख दो, यहाँ पर टेबल के ऊपर रख दो, या आग के पास ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. Independent of position of the slab, it will play its role in normal shape depending upon its thickness h. thickness पे depend करेगी और refractive index पे depend करेगी. Are you getting it? How much is the thickness that matters, how much is the refractive index that matters, but it should be parallel to the table. And we are talking about the flat surfaces. ठीक है, ये ट्राई कर लेना आप होमवर्क में. 9.3 इंपॉर्टेंट है ये. That's all from my side. Anything you want to clarify? Are you there? Yes, sir. Okay. 9.3, you can do it at all. We'll continue from here tomorrow. Shall I end it? Yes. Yes, sir. Okay.